Hello everyone. In this video, I am doing a question related to tossing of three unbiased coins simultaneously and to find the probability of various events. So, question is three unbiased coin, three unbiased coins are tossed. Three unbiased coins are tossed simultaneously मीन्स एक साथ थ्री कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट all heads, second part 2 heads, third part 1 head, and fourth part is at least 2 heads, and one more part at most 2 heads. So how we will do its solution? You know, when three coins are tossed simultaneously, when three coins are tossed simultaneously, comma, there are 8 outcomes. So these 8 outcomes are H, head, then head, tail, head, tail, head, tail, head, then head, tail, tail, head, tail, head, and last is tail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can see no outcome is repeated here. So first part, all heads. We can write P in the bracket, all heads. So how many times it has happened that all the heads have come? So it has come only one time. So 1 upon, you know, probability is number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So favorable outcomes here are only 1, because only once it has happened that on 3 coins H has come. So 1 upon total number of outcomes is 8. So this is my rough work. To remember, I am writing here H. So this is the favorable outcome for this event. Second, probability of 2 heads. So we are to see how many times has it happened that 2 heads have come. So you can see these events. Here is 2 heads, that is H, T. Here is also H, then T, H. So it has happened 3 times that 2 heads have come. So you can write it 3 upon 8. Now part number 3. Probability of 1 head. So you are to see how many times has it happened that only 1 head has come. So here is my rough work. 1 head you can see here. 1 head has come here
in HTT, then in TTH. So 2 times it has happened that one head has come. You can see once again, this is one head is HTT, we have taken. THT is also there, one option more is there, THT. So it has 3 times that one head has come up, HTT, TTH and THT. So the probability will be 3/8. So one head has come how many times? 3 times. Part number 4, probability at least 2 heads. ये पार्ट आपने अच्छे से समझना है. एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कम से कम 2 हेड्स आए हों, और 2 से ज्यादा आए हों वो भी ले लेंगे. तो 2 से ज्यादा कहां आए थे? HHH में. फिर 2 कहां आए थे? HHT में. फिर 2 कहां आए थे? HTH में भी आए थे. फिर THH में भी आए थे. ये नहीं लेना क्योंकि यहां पर ना तो 2 टाइम्स है ना 3 टाइम्स है. ये भी आप छोड़ दोगे, इसको भी आप छोड़ दो और इसको भी आप छोड़ दो. 1 2 3 and 4. So 4 times it has happened that 2 heads have come. और एक ऑप्शन इसमें ऐसी है जिसमें 2 से ज्यादा हेड आए. तो एटलीस्ट का मतलब आपने ऐसे समझना है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम. सो कम से कम 2 बार तो हेड आया ही हो, 2 से ज्यादा बार आए तो भी आपने उसको ले लेना है. सो 4/8 कैंसिल कर दो. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1/2. अब 5th पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड. अब एट लीस्ट और एट मोस्ट में क्या फर्क है? एट मोस्ट में आपने क्या करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा, यहां 1 हेड नहीं है, 2 हेड्स है यहां पर. एटलीस्ट एट मोस्ट 2 हेड्स. ज्यादा से ज्यादा 2 बार हेड और नहीं आया हो तो भी वो ऑप्शन ले लेनी है. तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड एक तो HHT में आए, एक HTH में भी आ गए, राइट. और देखो HTH के बाद THH में भी आए. ये ऑप्शन आपने नहीं लेनी क्योंकि इसमें 2 हेड तो है ही नहीं. ये ऑप्शन भी आपने नहीं लेनी क्योंकि इसमें 2 हेड्स नहीं है. ये भी आपने ऑप्शन नहीं लेनी क्योंकि ये सिंगल हेड वाली है. अब आपने इसमें TTT को ट्रीट कर लेना. क्यों? क्योंकि उसमें बोला कि एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, और अगर ना आए तो भी कंसीडर कर लो. तो इसकी भी ऑप्शन, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/8 आएगी. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. तो ये थे 5 parts related to tossing of 3 unbiased coins and finding their probabilities. So hope you have understood these all 5 parts. Thank you.